हेलो गुड मॉर्निंग। मैं से डॉक्टर आर्यन और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के समय इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रिदम डिसऑर्डर इन mitral valve prolapse? Premature ventricular contraction is the best answer because this is the most common rhythm disorder in MVP. The impulse is initiated कहाँ से होता है? Purkinje फाइबर से. The ECG normal sinus rhythm is followed by ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स. क्या होता है? ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय द नॉर्मल साइनस रिदम एंड कॉजेज वीक पल्सेस. क्या होता है? डिजीनेस कॉज करता है. डिजीनेस प्री सिंकोप एंड सिंकोपल एपिसोड. सिंकोपल एपिसोड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. 35-year male patient was brought to the emergency department with chief complaints of dyspnea associated with abdominal distension. Upon examination क्या है? icterus, fluid thrill, everted umbilicus noted. Identify the true statement about the particular manifestation that is inferred by the given details. Normal diet is given. Maximum dose of spironolactone given is 160 mg and maximum dose of furosemide given is 400. Amlodipine is used instead of spironolactone. This one is the best answer. Amlodipine is used instead of the spironolactone because the clinical manifestation of the question क्या है? ascites. Management of ascites क्या है? salt restriction diet. salt restriction diet. डायरेटिक यूज्ड होते हैं यहाँ पे स्पाइनोलैक्टोन प्लस फ्रोसिमाइड. मैक्सिमम अमाउंट डोज ऑफ स्पाइनोलैक्टोन कितना देते हैं? 400 mg एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रोसिमाइड कितना देंगे 160 mg. स्पाइनोलैक्टोन कॉज पेनफुल गायनेकोमेस्टिया, सो एमलोराइड इज यूज इंस्टेड ऑफ स्पाइनोलैक्टोन. इन द लार्ज वॉल्यूम paracentesis will cause a dehydration and raise the ammonia level. This can cause Asterixis. Hence the intravenous albumin is given with the LVP. Next question. Which of the following is not a subarachnoid hemorrhage? Rupture of perianeurysm, arteriovenous malformation, Charcot-Bouchard aneurysm, and the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is the best answer because the causes of subarachnoid hemorrhage क्या है? Causes of subarachnoid hemorrhage. Trauma most common होता है. Trauma most common. Rupture of बेरी एनुरिज्म. और क्या है? आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, चारकोट बॉकार्ट एनुरिज्म, एक्सटेंशन ऑफ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज इन hypertensive crisis. This one is the answer and this one is the causes of subarachnoid hemorrhage. ट्रॉमा मोस्ट कॉमन होता है. रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म होता है. आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन होता है. चारकोट-बारकोट एन्यूरिज्म होता है. एक्सटेंशन ऑफ इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस अंडरवेंट T2 weight MRI that revealed the presence of Dawson finger, which region of the CNS is known exhibit this feature. Juxtacortical, infratentorial and periventricular and spinal cord. The best answer is periventricular area because the Dawson finger show in radiograph feature of demyelination that appear a finger-like extension or projection of periventricular demyelinating pegs. They are typically seen distributed along with the axis of medullary veins perpendicular to the body of the lateral ventricles and collision junction of the MRI. This is relatively specific sign of multiple sclerosis and is thought to reflect क्या करता है? perivenular inflammation. Next question. A male in his 5th decade of life with a history of liver cirrhosis secondary to alcohol abuse presented with right upper quadrant, PNN ascites and sign associated with portal hypertension. Blood smear showed
macrocytic anemia, acanthocytes, and thrombocytopenia. Which among the following is the most probable diagnosis? Alcohol-related anemia, Zeus syndrome, hemolytic uremic syndrome, and hemolytic anemia. Here the history and the lab finding the question vicinity is a complaint of diagnosis Zeus syndrome. अब Zeus syndrome क्या क्या होता है? Zeus syndrome में alcoholic hepatitis plus acanthocytes और spore cell on peripheral smear. जो सिंड्रोम कब बोलेंगे? जब एल्कोहल हेपेटाइटिस हो प्लस एकंथोसाइट्स हो और स्पोर सेल ऑन पेरिफेरल स्मीयर में, एंड प्लेटलेट काउंट जो होता है डिक्रीज हो जाए, सीवियरिटी ऑफ हाइपर स्प्लीनिज्म, and long term use of vitamin E, and most important, severe mortality increases and increased risk of hemorrhagic stroke. So today that's all. Thank you and keep revising.